So reactions of azoles. Reactions of azoles. Azoles means we are considering here three compounds: thiazole, imidazole, and oxazole. See, there are number of chemical properties or number of reactions. Okay, and if you see, and these reactions keep changing from one condition to another condition. So let us take example first one, action of acid. If you take imidazole, for example, one azole, that is the imidazole, we have taken. When you add a small amount of HCl or small amount of H2SO4, you see the change. What happened to this reaction? You can see here the proton is taken by the nitrogen. If you add HCl in benzene, nothing will happen. If you add benzene, HCl in benzene, nothing will happen. But in imidazole, the lone pair of this nitrogen, the lone pair of the nitrogen is at here. It catches the H plus ion and it will form. But remember, this imidazole is highly stabilized molecule. The reason is two nitrogens are there. So what happened in this? What will happen? That this nitrogen lone pair will shift itself like this, and this bond will opens up. This bond will opens up at this nitrogen, and this undergoing to what resonance like this. And remember, the pKa is what equal to 7.1. It is not equal to pH. It's very different value. pKa, pH range is up to 14 only, 0 to 14. But here pKa can be goes to in hundreds, up to 100 we can say. Okay, fine. So that is not our discussion now. Right now, our interest is only about if H plus is added, the H plus goes to this nitrogen, then nitrogen catches it, and there is a formation of this such type of ammonium type compound. Fine. Similarly, if you take this oxazole also do the same job and form bond with nitrogen and with a positive charge on nitrogen. This undergo into resonance like this. Fine. But this is not stable. Okay, this is not stable. This is more stable. See imidazole, which is having the pKa 7.1, it means that it's a very stronger base than compared to other two thiazole of 1,3 type, thiazole and oxazoles. So what is oxazole and thiazole pK value? That is 2.5 and 0.8. pK value is acidic value, we can say. And remember, pKa is directly proportional to basicity, and pK is inversely proportional to acidity. A for acidity. तो अगर जितना ज्यादा वैल्यू होगा, that will be less acidic but more basic. So there are three pK values. Thiazole के लिए 2.5 है, oxazole के लिए और कम है, and means pKa inversely proportional to acidity. याद रखिए. Where pK will be less, that will be more acidic but least basic. pKa inversely proportional to acidic strength and directly proportional to basic strength. तो remember, जितने भी azoles हमारे पास में हैं, जितने भी azoles हैं, 5 member ring,
उसमें नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, उन सब में इमिडाजोल इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। अगर आप उसमें H+ ऐड करोगे तो सडनली H+ को रिएक्ट करता है, इतना स्ट्रांग होता है कि pyridine से भी स्ट्रांग होता है, याद रखिए। ओके, यस, दैट्स ऑल। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? amidine type resonance. So amidine type resonance is what? Amidine type resonance, the reason, what is the meaning? That these two nitrogens, this and this two nitrogens, they equally participate in the sharing of the charge or carrying of the charge. Okay, because both the nitrogen are same, so they can mutually share the positive charge or negative charge easily. Here in case of positive charge, and therefore they stabilize the ring, 5-membered ring. They hence the imidazoles are, remember the point, imidazoles are a stronger base than the any other azoles. Similarly, oxazole found to be least basic. What is the reason? The reason is this oxazole contain oxygen, and therefore, being a more electronegative atom oxygen, it withdraw electron and unable to donate the pair of electrons, and hence found to be weaker base compared to other azoles. Fine. So these are the very simple approach in this. Fine. Another reaction is, what is another reaction? Alkylation and acylation at nitrogen. Alkylation and acylation at nitrogen. So it is a very interesting reaction. If you take azoles, for example, especially imidazoles and thiazoles and oxazoles, तीन azoles के बारे में बात कर रहे हैं हम. Imidazole, then thiazole and oxazole. Can anyone from you tell me? So now, see, so these three azoles, that is imidazoles, thiazoles, and oxazoles. If you compare their reactivity towards the alkylation or acylation, so nitrogen is found to be of imidazole found to be more highly reactive. कितना reactivity order है देखिए, यानी कि अगर ऑक्सीजोल 1 टाइम रिएक्ट होता है या 1 ग्राम पर मिनट कन्वर्ट होता है, तो ये 900 टाइम ग्रेटर रिएक्टिव देन दिस वन, तो हाईली रिएक्टिव. यू कैन नॉट कंपेयर देयर रिएक्टिविटी, बहुत बहुत ज्यादा, 900 टाइम्स फोल्ड, 900 फोल्ड रिएक्टिव देन oxazoles, and this is only 15% higher, so respectively. So this ratio directly led us how to understand the reactivity of this particular compound imidazole. So let us take first one, alkylation में नाइट्रोजन पे हो रहा है. याद रखिए हेटेरोसाइकल में हमको दो पढ़ने को मिलेंगे, अल्काइलेशन ऑन नाइट्रोजन एंड अल्काइलेशन ऑन कार्बन, जबकि बेंजीन में वैसा नहीं होता है. बेंजीन में भी गो फॉर ओनली अल्काइलेशन ऑन कार्बन. तो इसमें नाइट्रोजन बहुत रिएक्टिव है, इससे नाइट्रोजन पे अल्काइलेशन होगा. अगर आप मिथिल आयोडाइड ऐड करते हो सिंपल रूम टेम्परेचर पे, मिथाइल क्या होगा, ये नाइट्रोजन लोन पर अटैक करेगा और मिथिल यहाँ पर ये हॉफमन एग्जॉस्टिव सॉल्ट रिएक्शन सॉल्ट बनेगा. अगर इसको फर्दर हीट करोगे आप तो, और रूम टेम्परेचर पे, नो प्रॉब्लम, that will give you the n-methyl imidazole. So this is called alkylation. Okay, और मिथाइलेशन ही रिपोर्टेड है. ओके फाइन. और अगर आप और एक मिथाइल ऐड करेंगे तो दूसरे नाइट्रोजन पे जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है. ओके फाइन. सिमिलरली अगर आप बेंजोइलेशन करोगे, बेंजोइलेशन, इसी बेंजाइल को, ये बेंजोइलेशन करोगे हम, तो बेंजोइल कहाँ जाएगा? नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी एरर यू कैन एक्सेप्ट असाइलेशन बेंजोइलेशन नाइट्रोजन पे इजीली होगा. यू सी, वेरी सिंपल आइडिया. तो रिमेंबर, अब इसमें इतने रिएक्शन क्या क्या है देखो. ये तो ये PHCOCl क्या है, ये तो दिस इज नथिंग बट द रिएजेंट, प्रीकर्सर. ये बेस है और ये क्या है, एसीटोन इज द सॉल्वेंट, और 95% यील्ड आती है, बहुत ज्यादा यील्ड है. ठीक है, वेरी वेरी बेस्ट रिएक्शन. एक्सेप्शन क्या है देखिए इसमें, अगर ये कंपाउंड जो इसमें प्रोडक्ट बनता है, ये तो इमिडाजोल है, अगर ये इमिडाजोल इसमें नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप अटैच्ड है, अगर इस पे आप मिथिल आयोडाइड डालोगे तो अब आपको रिएक्शन नहीं मिलेगी. क्यों ऐसा? क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा है कि इमिडाजोल इज 900 टाइम्स रिएक्टिव, लेकिन अगर
और रिएक्टिव बताया भी, देखिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर ही मिथिलेशन हो रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं जाने वाला है, आपको हीट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो अटैच्ड है वो ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या करता है, पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है रिंग में का और इमिडाजोल को इनएक्टिव कर देता है रूम टेम्परेचर पे। देयरफॉर रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग अल्काइलेटिंग रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सच रिएक्शंस। अगर आपको अल्काइलेशन करना ही है, मिथाइलेशन इथाइलेशन इमिडाजोल के नाइट्रोजन पे, तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जो रिएजेंट्स है इसमें, फॉर एग्जांपल मिथिल ट्रिफ्लेट और मिरवीन सॉल्ट, ये ट्राइथाइल ऑक्सोनियम बोरोन टेट्राफ्लोराइड जो है, अगर वो यूज करते हैं हम, तो ये देखिए इथाइलेशन होगा नाइट्रोजन पे, ये देखो ये नाइट्रोजन पे इथाइलेशन हुआ और आप इवन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आल्सो, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो दीज आर द कंडीशंस टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल डूइंग अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ओके, यू सी अगेन, अगर आप एसाइलेशन करते हो इमिडाजोल का तो जाता है एसाइलेशन नाइट्रोजन पे, यू सी हेयर और हेयर, नो प्रॉब्लम। कोई भी नाइट्रोजन पर लेकर जाओ आप, प्रोडक्ट वही रहने वाला है, उसमें कोई आपको there should not be any confusion, 100% yield, जबरदस्त रिएक्शन जाता है and you will get the 100% conversion. Third is very interesting reaction, that is called as Buchwald coupling. Imidazole ही है in all three azoles, imidazole only the compound which undergo Buchwald coupling. What is a Buchwald coupling? Very famous scientist named Buchwald coupling. Imidazole, when reacted with aryl halide or alkenyl halide, or we can say here in the presence of certain catalyst, तो रिएक्शन देखकर समझेगा आपको, ये है अल्कीनिल हेलाइड, अल्कीनिल ब्रोमाइड और फिनाइल अराइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग होता और ब्रोमो बेंजीन होता तब बोथ द केसेस में, और कॉपर कैटलिस्ट एंड सीजियम कार्बोनेट बेसिक मीडियम, some ligands are required, heating is also required, methyl nitrile is a solvent। तो क्या होगा, नाइट्रोजन कपलिंग, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, nitrogen carbon bond formation takes place. You see, very interesting reaction, highly applicable in the field of medicinal chemistry and organic synthesis. Buchwald coupling. Remember, what is Buchwald coupling? The coupling reaction between the primary amine or secondary amine and sp2 carbon containing bromine or chlorine. So sp2 carbon, this is sp2 carbon. This is the sp2 carbon. It can be of aromatic, it can be of alkene, which contain bromine or chlorine or iodine. In the present metal catalyst will gives you the what we say, the coupling product, right? Similarly, extension of this reaction is what, the nitration. Very simple, imidazole highly reactive, and when you add nitric acid and oleum, what is oleum? Sulfuric acid, highly concentrated sulfuric acid, 1% only to activate the nitric acid, so nitration would occur, and the nitration occur at what position? Wow, we know 1, 2, 3 and 4. This fourth position is a very reactive position for the nitrogen. Okay, yes, substitution takes place. If you take thiazole, that is not unaffected, that is remain unaffected. Thiazole is not reacted by the nitric acid, or nitration is not possible for thiazole because the ring is not activated. But other methyl group is attached, then it can undergo into substitution reaction at same position. Similarly, there are two products, 5-nitro and 4-nitro products, okay, are possible. See here, agar aapne methyl thiazole liya, so which position would be attacked? So if you add, so 5-nitro is okay, 5-nitro is more reactive than 4-nitro, means it is yield is 2:1, means this is 66%, this will be 33%. So position 3 and 4 are 5 and 4 and 5 are reactive. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So 5-nitro-thiazole and 4-nitro-thiazole, two products are possible, and 5-nitro is more reactive compared to 4-nitro because 5 position is highly reactive position and electron rich position because it is near to sulfur. Okay, it's near to sulfur.
And the last point under nitration is what about oxazole. Oxazole do not undergo nitration. They are highly unreactive because of high presence of oxygen, more electronegative atom. Let us go for the first fifth reaction. Thiazole is not reactive, very less reactive for sulfonation. Imidazole is highly reactive, and definitely our oxazole will not show sulfonation. Okay, and remember, you see, oxazole will not show sulfonation. If you add sulfuric acid and heat it 60% yield, fifth position is active. It will go to the fifth position of the nitrogen. So you go right anti-clockwise, it will give you fifth position. And the sixth reaction is what? Halogenation. So imidazole on halogenation, highly reactive